एग्जाम, इसमें रैंक inverse of matrix, Keeley Hamilton, eigenvalues and eigenvectors are very, very important, not only for CUET, but for JAM as well. तो इस पे फोकस कर लेना. System of linear equations is a very simple topic. It is rather just an application of rank. तो इस पे भी फोकस करना है. Like ये ये सारे टॉपिक्स इन अ वे इंटरकनेक्टेड है अगर हम देखें तो. Then we have linear differential equations. इसके लिए तो आई वुड से जस्ट फॉलो भगवान दास विश्वकर्मा की यूट्यूब प्लेलिस्ट और जीपी की प्लेलिस्ट. दिस लाइक दैट पर्सन इज अ गोड. लाइक लिटरली जो कंटेंट बनाया है उसी से तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वही क्वेश्चन आ जाएंगे. कमिंग ऑन टू स्टेटिस्टिक्स, फर्स्ट सेमेस्टर. फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ये सब बेसिक्स हैं, इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें बेसिक स्टैट्स के पता हो. देन वी हैव रैंडम वेरिएबल्स, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन. ये तीन अगर कर लिया तो आई गेस वी आर वेरी क्लोज टू गेटिंग एटलीस्ट टू डी यू, गेटिंग क्लोज टू डी यू आई से. तो ये टॉपिक तो मैं आगे जाके स्ट्रेस में डिस्कस करूंगा. इफ वी टॉक अबाउट पीएमएफ, लाइक टॉक अबाउट इन द लेटर पार्ट. एस्टिमेशन, सेकंड सेमेस्टर, सेकंड ईयर. So again, I'll talk stats थोड़ा detail में. So let's go on to the other part I don't want to talk about. Okay, so I wanted to talk about the distribution of 23. मैंने 22 23 का पेपर लास्ट नाइट एनालाइजिंग द पेपर कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं. तो डिफरेंशियल कैलकुलस वाज आवर मेजॉरिटी. एज आई सेड, डिफरेंशियल कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. Because at the end of the day, you'll be getting 7 questions. Integral में 4, matrices में 5, differential, and so near about you will get 25 questions from mathematics. Plus minus 2, 3 is what you can expect. But more or less यही रहने वाला है. But if you want the statistics, descriptive से 3, classical probability तो first semester से तुम कह लो कि 6 questions. But random variables is very important, not only for CUET but for JAM as well. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 11 और इन्फ्रेंस 10. लाइक टोटल अगर देखा जाए 31 क्वेश्चंस तुम्हें इसी से मिल जाएंगे. एंड आई डोंट नो इफ यू टॉक टू योर सीनियर्स जिन्होंने इस बैच में दिया था. द मार्क्स रिक्वायर्ड टू गेट इनटू डीयू वर 130 आउट ऑफ 400. सो लाइक लिटरली तुम अगर तुमने इन टॉपिक्स पे कमांड कर लिया, यू गेट वेरी क्लोज टू गेटिंग इनटू डीयू. तो या नाउ डिफरेंशियल कैल, say let's discuss stats now. As the statistics, as I said, 50 questions आएंगे तुम्हारे पास. First topic is random variables. Can anyone tell me what random variable is? Any one of you? Like voluntarily, please. Okay, so let me talk about it. So random variable stats की as like हमारी HOD मैम कहती हैं, अगर ये मैथमेटिशियंस का होता तो वो कांस्टेंट लेते, बट अगर जो रैंडम वेरिएबल हमारे में फंक्शन होता है, तो द रीजन व्हाई स्टैटिस्टिक्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मैथमेटिक्स इज बिकॉज रैंडम वेरिएबल हमारा एक फंक्शन है. सो दैट इज रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन, एंड रैंडम वेरिएबल के बिना पूरी स्टैट शायद इनकम्प्लीट है. तो इफ समवन इज इन द फर्स्ट ईयर, प्लीज रैंडम वेरिएबल को अच्छे से समझो कि उसकी डेफिनेशन क्या है. So random variable starts with the basic definition of, what random variable is. Then we have
the PDF and PMF के questions. You can expect a question out of CDF. CDF का question तो एक मिलेगा ही मिलेगा. The exam में भी एक question पक्का होगा. Then we have questions on estimation, not estimation, expectations, standard deviation. Yeah, like more about expectations. What expectation is, standard deviation, and whatsoever. What you can expect. You can expect the question out of the PDF and PMF. And yeah, like random variable के topic से ये मिलेंगे. It's like it is a very basic topic, but most people don't have a command over it. So make sure you do have a command. Post which we have probability distributions. In probability distributions, we have the standard name distributions. It may be discrete, hai, normal, sorry, it may be continuous. So please make sure you remember all the mean, the variance, किसी किसी का mode, like uniform is a special case. Uniform का तुम्हें mode पता होना चाहिए. जैसे वो constant रहता है, वो it is very same. Just to have an idea. एंड इस पे क्वेश्चंस जो इसके एप्लीकेशंस पे क्वेश्चंस तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो. सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मल की एप्लीकेशन पे. एप्लीकेशंस नॉर्मल इज अ वेरी फेवरेट टॉपिक. इस पे जो उसका 8, 10, 12 रूल है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है. एंड वेल शेप्ड होता है. तो ट्राई टू रिमेम्बर द प्रॉपर्टीज इज वेल. एंड देन वी हैव जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन. Joint distribution is by far my favorite topic because it is a pure application of mathematics and statistics. इसमें questions को it's better approach to solve using a graph. I'm sure most of you guys would have tried solving some of these questions. So it's better to solve using a graph, not using the basic integration rule that we follow. And yeah, joint distribution में primarily ये और range का बहुत ध्यान रखना होता है कि इंटीग्रेशन अच्छे से करना है इसमें. Next we have, yes, this is so anyone has studied weak law of large numbers, central law, just for the basic idea. Okay, so you can expect a question, at least a question तुम expect कर सकते हो इसमें. Weak law या central limit theorem. The central limit theorem is a very important unit. Like even in masters, even for jam, it is a very important unit. Redistribution, yeah. Okay, so sampling distributions किसी ने पढ़ ली है third semester? Or you have the idea what sampling distributions are? Okay. Sampling distribution is a simple topic. You can expect 3 से 4 questions on it. Exam में it is
3 to 5 मार्क्स का टॉपिक, तो literally they are 3 के marks. You just need to know the definitions and the properties what chi-square is. Like it is square if like if x is normal 0 1, then chi-square x square is our chi-square variate. ये definition याद रखनी है. इसका mean and variance, बस ये प्रॉपर्टी होती है इसकी बेसिकली. तो ये याद रखना है. पी डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी assumption, इसका मीन क्या होता है और इसकी वेरिएंस. मीन क्यों एग्जिस्ट नहीं करता वो भी देख लेना. एंड देन वी हैव आवर एफ डिस्ट्रीब्यूशन. That is nothing but x upon y upon n1 by n2, where x a degree of free, like x is our chi-square variate with n1 and y is chi-square with n. Like literally standard sampling distributions कितने पार्ट में खत्म हो जाता है हमारा. लाइक इतने, सिर्फ इतना पढ़ना है हमें, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि इससे ज्यादा वो लोग पूछते भी नहीं है. Then we have, then we have the weak laws and will limit, like limit theorems, as I said, limit theorems की application and definitions. The definition and the application. Like CLT की क्या डेफिनेशन है, इसकी एप्लीकेशन. एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पर सेम वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स के भी सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं. सिर्फ CUET में नहीं, बट you will get the same type of question in JAM too. So again, coming on to the very important topic, that is of estimation. Estimation आप लोग 4th सेमेस्टर में पढ़ते हैं. अगर आप DU में है तो दूसरे यूनिवर्सिटीज के अगर कोई है तो you know what estimation or the inference theory is. It is again a very repeated, like stats is more about I love to say stats में काफी repetitive questions आते हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बट जैम में अब आपको चैलेंज कर रहा है. तो इफ एनीवन इज प्रिपेयरिंग फॉर जैम, बी रेडी फॉर इट. वो आपको मैथमेटिकल अप्रोच पे देंगे, बट इन CUET इट इज मोर, एज आई सेड, इट इज मोर फॉर योर स्पीड. सो वो लोग काइंड ऑफ रिपीटेटिव क्वेश्चन देते हैं. सो इन्फ्रेंस में व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, सबसे लाइक एस्टिमेटर्स की अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी निकालना. Okay, so what we have, the unbiasedness, the expectation of t should be equal to theta. ये एक टॉपिक, इस पे क्वेश्चंस कम आते हैं यूजुअली. कंसिस्टेंसी पे अच्छे खासे क्वेश्चन आ सकते हैं. यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन. एफिशिएंसी ऑफ एस्टिमेटर्स, अगेन समथिंग इम्पोर्टेंट. मेथड ऑफ मोमेंट्स, से कम आते हैं यूजुअली, इससे ज्यादा MLE से आ जाएंगे आपके पास. MLE का एक क्वेश्चन पक्का आएगा. सफिशिएंसी का क्वेश्चन सिंपल वाला नहीं होंगे, उसमें वो रेंज डिपेंडेंट वाले क्वेश्चन होंगे. जैसे अगर आपने यूनिफॉर्म का पढ़ा हुआ हो तो यूनिफॉर्म के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं. फैक्टराइजेशन थ्योरम से ही आ सकता है, बट इससे अच्छा यू कैन यूज लेमन शेफे इंस्टेड टू गेट, लाइक कंप्लीटनेस पे क्वेश्चन आते हैं तो उसके बेसिस पे फैक्टराइजेशन थ्योरम उसकी क्या एप्लीकेशन हो जाती है. एज ए सेड, लेमन शेफे थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी एप्लीकेशन से आप कंप्लीट और सफिशिएंट स्टैटिस्टिक निकाल लेंगे. UMB इससे निकल जाता है.
ग्रामर राव, यस ग्रामर राव इज अगेन इम्पोर्टेंट। कॉन्फिडेंस इंटरवल पे क्वेश्चंस कम आते हैं, बट जो आएंगे वो थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं, तो मेक श्योर यू हैव टाइम फॉर इट। टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस पे सिर्फ एक अल्फा, एक अल्फा गिवन होगी तो पावर निकालने के क्वेश्चन आएंगे, क्रिटिकल रीजन का क्वेश्चन आएगा, और वन माइनस बीटा लाइक इट इज पावर, और इससे तुम्हें टाइप टू एरर निकलने वाला जाएगा। जी। कैन वी, कैन यू गाइस सी दिस, लाइक व्हाट I've written अभी? सैम्पलिंग एंड डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हमने डिस्कस, लाइक डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इज दैट design of experiments is what we are left with. Design of experiments, you guys are likely to study this in the sixth semester if you are a student of DU, CRD, RBD and LSD। हमें सचिन सर ने पेपर पढ़ाया था और काफी अच्छा पढ़ाया था, एंड मैंने अलग से कुछ नहीं पढ़ा था इसके लिए, तो सर ने काफी अच्छा पढ़ाया था, तो ये एक रीजन हो सकता है। पर मेरे को काफी समझ आ गया था। इसमें क्वेश्चन वही आएंगे एनोवा पे, एक आ जाएगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, लाइक मेजरली क्वेश्चन एनोवा पे आएंगे, या सीआरडी, आरबीडी और एलएसडी की तीन लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं, उस पे क्वेश्चन आ जाएगा। दैट्स इट। लाइक मैंने सर के सिर्फ नोट्स पढ़े थे, मैंने यहाँ तक की बुक भी नहीं पढ़ी थी, तो ये समझ लो ये काफी इजी टॉपिक है, बस हो जाएगा। Coming on to the let's now talk about the distribution once again. So as I said, probability distribution भाई बहुत important है, हद से ज्यादा important है। ये टॉपिक हद से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको प्लीज फोकस कर लो। एक बहुत इजी है और बहुत आराम से हो जाएगा। इन्फ्रेंस अगेन, अगर कोई फिफ्थ फिफ्थ सेम में है वो जानता है इन्फ्रेंस कितना बेसिक टॉपिक है और कितना रेपिटेटिव है। एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसके रिसर्च, अगर रिसर्च के क्वेश्चन आ गए तो फिर तो हो ही नहीं सकते। लाइक काफी तो हम मास्टर्स वालों से नहीं होते, तो यूजी लेवल से नहीं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते कि। एंड यस वी हैव नेक्स्ट, एंड रैंडम वेरिएबल, वेरी बेसिक, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। तो आई वुड लाइक टू गो नाउ टू नाउ डिस्कस थोड़ी सी स्ट्रैटेजी कि मैंने क्या किया था, मैंने क्या नहीं किया था, दूसरों ने क्या किया था कि उनका गलत हुआ। तो सो द एग्जाम स्टार्ट्स विद योर जनरल सेक्शन, इसके 25 क्वेश्चंस, एंड व्हाट वी हैव द स्टैट्स के 75 क्वेश्चंस। स्टार्टिंग में तुम्हें ये 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड प्लीज इससे गलती से भी स्टार्ट मत करना, क्योंकि स्टार्टिंग में यू कैन लाइक इट्स क्वाइट लाइकली कि तुम इस पे 45 मिनट तक खराब कर सकते हो। मेरे काफी दोस्त हैं, उन्होंने इसमें 1 घंटा लगा दिया था और उनके पास फिर स्टैट्स में के लिए टाइम ही नहीं बचा था, एंड दे वर इक्वली टैलेंटेड, दे वर they could have got easily somewhere about 220 230, जितना उनमें कैलिबर था, इवन हो सकता है 250, बट क्योंकि उन्होंने इस सेक्शन में इतना ज्यादा टाइम लगा दिया, they just got, like I literally know a friend of mine, उसने उसके 177 आए थे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम इस सेक्शन से स्टार्ट करो और जितना जल्दी हो सके इस सेक्शन को खत्म करो, लाइक एटलीस्ट गो थ्रू एन एंटायर रीड। काफी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हें लगेगा कि काफी रिपीटेटिव हैं, जो तुमने अपनी पास्ट प्रैक्टिस में कर रखा है। ट्राई टू डू, लाइक वंस यू डन विद एटलीस्ट 30 और 35 क्वेश्चंस, शिफ्ट टू जनरल सेक्शन, जितने क्वेश्चन हो जाए सिंगल रीड में वो खत्म कर लो, उसके बाद फिर से स्टैट्स पे जाना। तो अगर मैं अपने मार्क्स बताऊं, मेरे 220 स्टैट्स में थे और 55 इस जनरल सेक्शन में थे, एंड आई ट्राइड ऑल, लाइक आई मार्क्ड ऑल द ऑप्शंस फॉर जनरल सेक्शन। ऑल्सो अ टिप फॉर दिस सेशन, मेरा एक दोस्त आईआईटी में है, उसने मेरे को एक टिप बताई थी ये एंट्रेंसेस के लिए, कि स्टैटिस्टिकली जो अगर तुम्हें आंसर नहीं पता है
सारे बी या सारे सी मार्क कर दो, यू इट्स क्वाइट अनलाइकली कि तुम्हारा लॉस होगा। सो मैंने इधर नहीं किया था, बट एक ओआर नाम का एक कोर्स होता है, तो ओआर के एंट्रेंस में मैंने ये कर दिया था एंड आई गॉट अ +8। सो यू कैन एक्चुअली यूज इट। मेरे को एक्चुअली +8 का बेनिफिट मिल गया था वहाँ पे। सो आई वुड से कि मैंने सारे बी मार्क कर दिए थे, क्योंकि मेरे बाकी ऑप्शंस बी थे, तो मैंने सी मार्क कर दिया था। सो यू कैन गो फॉर इट इफ यू हैव द रिस्क एपेटाइट। तो ये कर लेना, बट यहाँ मत करना। मैं ये सजेस्ट करूंगा, यहाँ चांस मत लेना। तो या 120। एक स्पेसिफिक मैं एक चीज बोलूंगा कि मेट्रिसेस के क्वेश्चंस काफी टाइम लेते हैं। अगर तुम्हें आइगन वैल्यूज के क्वेश्चंस आ गए, इसमें अब हमें जैसे मान लो कोई भी मेट्रिसेस है ABCDEFGHI, और तुम्हें ऐसा है कि दो आइगन वैल्यूज दी हुई हैं और तीसरी निकालनी है, यू हैव टू कैलकुलेट द थर्ड वन। तो काफी लोग ऐसे होते हैं कि इन दो इससे फैक्टर बनाएंगे, फिर फैक्टर बना के इसको पूरा सॉल्व करके वो करेंगे, जबकि हमें पता है कि इफ वी सब्ट्रैक्ट दिस आइगन वैल्यू, लेट्स से इट इज x, और इसका डिटर्मिनेंट निकाल दें तो वो 0 आती है। तो हम वो प्रॉपर्टीज यूज करके लाइक ट्राई टू हैव एन एप्लीकेशन वाला माइंडसेट इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू अ थ्योरी वाला माइंडसेट। सिंस ये वाला पेपर ही तुम्हारी एप्लीकेशन की स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रहा है कि तुम कितना अप्लाई कर सकते हो चीजों को। तो यस, दिस इज वन थिंग। सो इज मीन वैल्यू का, आई वुड से मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम। टाइम हो, लाइक इफ यू नो द आंसर तभी इसको ट्राई करो, क्योंकि काफी टाइम कंज्यूमिंग होती है। कम से कम तुम्हारे 3 से 4 मिनट एक क्वेश्चन में ले सकती है अगर तुम सॉल्व करने बैठ गए तो ये मत करना। और किसी क्वेश्चन को ईगो पे मत लेना। एग्जाम के टाइम पे मैंने ये गलती कर दी थी कि मैंने थोड़ा सा ऐसे ईगो पे ले लिया था कि ये सॉल्व हो कैसे नहीं रहा है। तो इसकी वजह से काफी देर मार्जिन से गया है मेरा। तो प्लीज मेक श्योर यू डोंट टेक एनी क्वेश्चन ईगो से। जितनी जल्दी स्किप हो सके, आ रहा है तो करो, नहीं आ रहा तो बाद में आ जाएंगे, और उसको सॉल्व करने के चक्कर में। तो ये जेन्युइन सजेशन है, और यहाँ पे तुम्हें टाइम ही नहीं मिलेगा। एग्जाम में तुम्हारे पास कंपैरेटिवली 3 मिनट पर क्वेश्चन होता है, यहाँ 1 मिनट और 12 सेकंड। तो ये तो बिल्कुल भी मत करना। और यहाँ 20 सेकंड से ज्यादा किसी क्वेश्चन में मत लेना। अगर तुम्हें लग रहा है कि 20 सेकंड आ रहे हैं, ठीक है, 20 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं तो स्किप कर देना। लंबे क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, इट इज क्वाइट लाइकली कि तुम्हें जो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट वाला टॉपिक है उसमें ज्यादा टाइम लगेगा पढ़ने में। तो वो भी एक अवॉइड कर सकते हो कि चलो बाद में आ जाएंगे। टाइम ठीक ठाक होता है, 50-60 कर दो, उसमें से अगर 40 भी ठीक हो गए तब भी अपने को ड्यू मिल सकता है। जस्ट लाइक, बट टू बी ऑन अ सेफ साइड ऑलवेज टारगेट समवेयर क्लोज टू अ 200, क्योंकि 200 में हिंदू भी मिल सकता है, बड़ा मजा आता है। आ जाओ भाई। ओके ना। लेट मी गो टू रिसोर्स। कि तुम लाइक स्टैट्स वालों के पास, जब मैं एग्जाम दे रहा था तो हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरे पास क्वेश्चन नहीं होते थे, और वो कोविड वाला टाइम था। तो एक ही रिसोर्स कर करके काफी वो हो गया, और क्वेश्चन मिल नहीं रहे थे, तो काफी खाली था, कुछ भी ट्राई कर लिया था। तो आई फाउंड अ लॉट ऑफ रेलिवेंट रिसोर्सेज दैट आई विल शेयर विद यू। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैम PYQ, सबसे इम्पोर्टेंट भाई, सबसे ज्यादा। एक, भले ही ये सेशन CVT का है, बट आई विल लव टू हियर कि लाइक अगले साल तुम में से काफी लोगों का जैम निकले, बहुत आराम से हो सकता है। अब की बार तो 35 मार्क्स लिए थे यार, लाइक लिटरली 35 मार्क्स लिए थे। तो इफ यूर फ्रॉम अनरिजर्व तो ट्राई कर लो, एग्जाम निकल जाए, बहुत ही बढ़िया है। IIT में सब कुछ है, लाइक सब कुछ है। जैम PYQs, DUET, BHU, ये तुम्हारे स्पीड के लिए स्पेसिफिकली। लाइक BHU के क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड ज्यादा होते थे, जो इनका PET होता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये मेमोरी बेस्ड है, तुम्हारी स्पीड लाइक तुम कितनी तेज कर सकते हो वो है। DUET तुम्हारी मेमोरी बेस्ड होता था थोड़ा एग्जाम। और एक होता है हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इफ यू आर अवेयर अबाउट हैदराबाद यूनिवर्सिटी। इसके भी, इसके 10 ईयर मिल जाएंगे तुम्हें। there's a चैनल और टेलीग्राम, टेलीग्राम पे चैनल है स्टैटिस्टिक्स लवर आई है। और एक है IIT
गेट स्टैटिस्टिक्स या जैम स्टैटिस्टिक्स ऐसे कुछ करके है स्टैटिस्टिक्स। तो ये दो चैनल हैं, इसको कैन फॉलो इफ यू वांट, यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज हियर। अब ये लोग नहीं डालते बट पहले उस टाइम पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज डाल रहे थे। एक इन्होंने ऐसी स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चंस, ये 1000+ क्वेश्चन कुछ ऐसा एक पीडीएफ भी था, तो वो भी अच्छा था। उसमें अनअकैडमी के जितने टेस्ट वगैरह होते थे हम लोग के टाइम पे, तो उसको उसकी एक रिसोर्स बना रखा था, तो यू कैन एक्चुअली फॉलो वो वाला रिसोर्स। एंड व्हाट वी हैव, एंड यू हैड आईएसएस पेपर 1 एंड पेपर 2, बट सेलेक्टिवली, क्योंकि काफी टॉपिक होते हैं, तो पेपर 1 और पेपर 2 क्वेश्चन कर सकते हो और बेसिक होते हैं। अच्छी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड यूपीएससी सिविल सर्विसेज ऑप्शनल स्टैट्स का पेपर, स्टैट्स पेपर 1, ये डिस्क्रिप्टिव नेचर, लाइक ये होता तो डिस्क्रिप्टिव है, बट तुम्हें क्वेश्चंस का आइडिया मिल जाएगा, तो यू कैन एक्चुअली फॉलो दिस रिसोर्स। कमिंग ऑन टू बुक्स, बुक्स फॉर डिफरेंशियल एज आई सेड, शांति नारायण इज अ गुड बुक। इससे ज्यादा अगर करना हो तो आई विल टेल यू अभी बाद में, अभी बताता हूँ। सो इज फॉर इंटीग्रल, बट इसको सिलेक्टिवली पढ़नी है हमने। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्टिवली पढ़ें, इसके एग्जाम्पल्स कर लो और थोड़े से क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि बहुत हाई लेवल क्वेश्चन भी हैं इसमें, जो तुम अगर आईएसआई को पेपर देते हो उसमें भी एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। तो मेरे को काफी अच्छी लगती है शांति नारायण फॉर दिस वन रीजन, पढ़ता है एग्जाम्पल्स ऑन द मैथ एक्सरसाइजेस। यस, डिफरेंशियल के लिए, डिफरेंशियल सिर्फ इस पेपर में आता है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि इसको बिल्कुल भी तुम डीप में पढ़ो। आई एम नॉट रॉन्ग, हमें ऐड नहीं हुआ है इस साल के तुम्हारे, मैंने सिलेबस देखा नहीं है, बट लास्ट ईयर तक तो आई गेस नहीं था। तो इसके लिए यू कैन रेफर जीपी की वीडियो और भगवान दास, जो वो लोग वीडियो में करा रहे हैं वैसे ही सिंपल क्वेश्चंस उठ के आ जाएंगे तुम्हें। ज्यादा से ज्यादा एक सीएफ होता है ये, और एक पीआई होता था, तो ये दोनों निकालने होते थे और लेस। और मेट्रिसेस, आई डोंट पर्सनली रिकमेंड एनीवन, वो जो रेड कलर की हमें बुक शायद रेफर करते थे यूजी में, तो आई डोंट लाइक दैट बुक। आई इंस्टेड वेंट फॉर एसके मापा एंड गिलबर्ट स्टैंग। गिलबर्ट स्टैंग अगर कोई भी फर्स्ट ईयर में है, अगले सेमेस्टर में 1806 एक कोर्स है, अगर तुम नहीं पढ़ते तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एमआईटी का प्रोफेसर है, बहुत सीनियर, बहुत ही कमाल वीडियो लेक्चर्स। एमआईटी ओसीडब्ल्यू का मिल जाएगा तुम्हें, यूट्यूब की प्लेलिस्ट है एमआईटी ओपन कोर्स है, प्लीज 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 गो थ्रू इट। एंड सीक्वेंस सीरीज, सीक्वेंस इन सीरीज में इट्स बेटर कि तुम जो एक मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है उस पर मत जाना। उस पे एन तुम्हें गिवन होगा, फॉर इंस्टेंस 7+n मान लेते हैं, कुछ भी ऐसे तुम्हें लिमिट पूछेगा कि कन्वर्स करेगा, डाइवर्स करेगा, जो भी है। एक an-1, यस, an-1 ऐसे एक रिलेशनशिप होते थे, या an² ऐसे करके, तो उसमें वो लिमिट पूछेगा। ये मत करना कि एक कन्वेंशनल डेफिनेशन से चलेगा, सिंपल है इन्फिनिटी पे, ये भी L² हो गया, ये 7+L हो गया, L² - L = 7, L² - L - 7 = 0, आ गई लिमिट। क्या जरूरत है, हम कन्वेंशनल डेफिनेशन से जा रहे हैं और उसको प्रॉपर ऐसे सॉल्व किया जा रहा है। जितना ज्यादा एप्लीकेशन यूज कर पाओ, जितने ज्यादा क्वेश्चन करो उतना बेटर है इसके लिए, एग्जाम के लिए। अगर कोई आईएसआई वाला है तो ऑफ कोर्स योर बेसिक्स नीड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो लोग सिर्फ एग्जाम तो एक बार ही को निकाल दोगे, पर इंटरव्यू पे फिर वो लोग समझ जाते हैं कि कौन कैसा है। ये हमारी हो गई स्टैट्स के लिए। एफएमएस इज शुड बी योर बेसिक बुक। एफएमएस इज लाइक बेसिक बुक है, इसके एग्जाम्पल्स और इसके क्वेश्चन सारे जो भी रेलिवेंट है ये एक इम्पोर्टेंट वो है ऐसे इसमें। इसके बाद देर इज दिस बुक, इट्स कॉल्ड पीस आउट,
वेरी नाइस बुक इवन फॉर जैम। एक जैम सॉल्यूशन नाम की एक बुक आती है, क्वेश्चन ऑन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, कुछ ऐसे ही है। एस सी गुप्ता ने लिखी है, एंड सर एस सामने, एस एम की पब्लिकेशन है। इसी के ज्यादातर सॉल्यूशन है। तो अगर कोई अभी स्टार्ट कर रहा है, इफ दे आर इन देयर थर्ड ईयर और सेकंड ईयर, और इफ दे आर स्टार्टिंग, तो ये दो बुक काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है मतलब साथ साथ में करने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें सॉल्यूशन नहीं समझ आ रहे होते हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती। तो ये चीज देख लेना काफी। इंफ्रेंस के लिए आई वुड से एफएमएससी ठीक है। अगर किसी में ज्यादा शक्ति है या उसको ऐसे पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है, तो दे कैन गो फॉर पहला। मेरे को माइग्रेन हो गया था पढ़ते पढ़ते, बहुत ही अलग लेवल किताब है ये। मेरे को लिटरली माइग्रेन हो गया था। मैंने बहुत कोशिश करी कि इसको समझे समझे, 4 दिन लगाए थे बस। तो इसके फिर क्वेश्चन कर लेंगे अगर प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो। मैं मैथ्स का तो मैं बताता हूँ। और मैथ्स के लिए एक सीरीज और, संवेदना, अगर तुम कर रहे हो तो। संवेदना किसी को पता है? संवेदना मैथमेटिक्स की एक बुक सीरीज है। तो संवेदना, अगर जैम कर रहा है कोई भी, तो संवेदना तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि इसमें मैथ्स, आईआईटी जैम मैथ्स के भी क्वेश्चन हैं, एमए के, पीआईएफआर, और मेजरली जितने भी एंट्रेंसेस होते हैं, शायद गेट के भी कुछ क्वेश्चन हैं। तो मैथ्स तुम्हारी काफी स्ट्रांग हो जाएगी। ये 30 मार्क्स में से तुम ना करके भी तो 15 मार्क्स तो आराम से निकालोगे, 15 लाते ही। इट्स वेरी इजी। एक और बुक थी, लाइक लास्ट के लिए तुम रख सकते हो एग्जाम से कुछ टाइम पहले, इट इज कॉल्ड statistics and data. It is by John Rice. You can actually go through. Also, I forgot to mention Sheldon Ross for your random variable and probability distributions. This book is my favorite. For your random variable and probability distribution. This book is my favorite. Uh, yeah, distributions. एंड लिमिट थ्योरम्स टू। लिमिट थ्योरम्स के जैसे क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे एंट्रेंस में, वही चीज तुम्हें दोबारा मिल जाएगी। थ्योरम्स, शेबिशेव, सब सारे टॉपिक्स हमें इसमें वैसे के वैसे मिल जाएंगे। यस, so also you can refer to this book. It's called VK Rohati, if you're aware of it. Again, a very nice book. But I would say VK Rohati, Pasella are more for your jam and ISI preparations. तो अगर मतलब जब ये सब बुक्स हो जाए उसके बाद ट्राई करना, अभी स्टार्टिंग इनसे मत करना। एंड यस, इफ यू स्टार्टिंग जस्ट, एफएमएस अच्छे से पढ़ डालो। एफएमएस इज द बेस्ट बुक। लाइक मोस्ट मास्टर्स में कोई ये बात कंसिडर नहीं करता, बट यूजी लेवल के लिए दैट बुक इज वन ऑफ द बेस्ट। एंड यस, प्लीज फोकस ऑन प्रिसिशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन, ही वाज, आई वुड से उसके कंसेप्ट्स मेरे से बेटर थे, बट क्योंकि उसने प्रिसिशन पे ध्यान नहीं दिया, ही वाज नॉट एबल टू गेट अ नाइस रैंक, आई वुड से। और मैं मजाक में कहता था कि रैंक 1 तू ले आएगा, रैंक 2 मैं ले आऊंगा। लाइक एग्जाम के टाइम में हम लोग ऐसे मजाक करते थे एक दूसरे से, बट दोनों का ही नहीं हुआ, दोनों ही ड्यू में। सो यही रीजन था कि वो प्रिसिशन पे उसका इतना बढ़िया नहीं था।
और एग्जाम के टाइम पे हम लोग थोड़े से ऐसे नर्वस हो गए थे क्योंकि वो पेपर एकदम ही अलग लेवल आ गया था। तो ये चीज थी। एंड यस, मोर और लेस मेरे पास यही था बताने को। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड प्लीज। We have received over 50 plus questions. What we did is saturated them and formed 11 questions to answer all of them as most were repetitions. So I'll share my screen. So the first question is how to prepare the additional topics for CUET which are not in the JAM syllabus like differential equations and design of experiments. I guess I mentioned this uh, in the slide. Design of experiments, like very basic topic as I mentioned, CRT, RBT, LSD के concepts जो होते हैं और बेसिक डेफिनेशंस क्या होती है। एक एनोवा का टॉपिक होता है, तो एनोवा क्या होता है और उसके डिफरेंट लाइक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एसएससी क्या होता है, एमएससी क्या होता है, कैसे निकलता है वो देख लेना, और एफ रेशियो क्या होता है और एफ स्टेटिस्टिक क्या होता है, तो वो एक कवर हो जाएगा इन डिफरेंशियल इक्वेशन एज आई मेंशनड। इट इज बेटर टू गो फॉर वीडियो रिसोर्सेज, यूट्यूब पे जितनी भी प्लेलिस्ट हैं, इंस्टेड ऑफ एनी डिफरेंट रिसोर्स। डोंट गो फॉर बुक क्योंकि काफी ज्यादा हो जाएगा नीड ऑफ अटेंशन का। Next. So next question, how to prepare for CUET without tuition and coaching? Really, just focus on self study. Just focus on self study. Be even if you are not, if you even if you are a part of ECAs and all, अगर sports के हो तब भी take out time for let's say 2 hours. Like be consistent enough, and it is actually a very easy paper to get into. I would say just be thorough with your practice and that's it. When to start preparing for the exam and what study materials are needed? It depends on what is your level of basics. Get your basics sorted, that's it. And like if like it depends किस level पे हो, तो अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे एक महीने में basics cover हो जाएंगे, so plus what's fair, so that is a very subjective question to answer. And study materials, I guess I mentioned it in the in whatever I told about. Was there a difference in approach for CUET after giving JAM? To be honest, I just went with a very free mindset. मुझे पता था मेरा PHU में हो जाएगा और मेरे टाइम पे भी उठा नहीं, तो आई वाज वेरी स्ट्रेस फ्री। एग्जाम के टाइम पे आई टुक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस क्योंकि एग्जाम देख के आई गॉट ब्लैंक। तो अप्रोच यही है, फ्री माइंड, स्पीड एंड प्रिसिशन, दैट्स इट। लाइक लिटरली दैट्स इट। अनफोर्स्ड एरर्स काफी हो सकते हैं, वो एक चीज काफी इंपॉर्टेंट होगी, तो वो चेक कर लेना बस। How to manage college and entrance together, especially as there is a 66% attendance strict rule. सोसाइटी ज्वाइन कर, थर्ड ईयर में वैसे भी अटेंडेंस होती है, लाइक गाइस, इफ समवन कैन टेल मी। होता है बट बच्चे सीरियसली लेते हैं नहीं लेते हैं वो इंडिविजुअली डिपेंड करता है. अटेंडेंस यार, इवन आई थिंक हम लोगों के टाइम पे प्रोफेसर भी काफी ऐसे वो थे, जनरस थे, उन्हें भी पता था कि एंट्रेंसेस सबको ही देने हैं। एंड अदर आई वुड से हमारे जितनी भी हमारी फैकल्टी थी उन्होंने ही बोला था कि बेटा मेक श्योर यू आर डूइंग मास्टर्स। सो इवन दे वर वेरी सपोर्टिव। इफ यू हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट अटेंडेंस रूल, यू समहाउ हैव टू मैनेज। थोड़ा सा स्लीप शेड्यूल वो करो, जितना फन हो सकता है थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर लो। आई वुड से यू कैन manage things in a very nice way. Also, what else you can do? अगर तुम्हारे बेसिक लाइक बैक पीछे से तुमने अगर अच्छे से पढ़ाई करी है, तो इट गेट्स वेरी इजी आई वुड से। बट या लाइक अगर स्ट्रिक्ट अटेंडेंस रूल है तो इट गेट्स वेरी हेक्टिक। Moving to the हार्ड next चाहिए। question. Considering the long gap between first and last semester, how can someone revise first sem topics considering he has not made any notes and that too without tuition? So if you, I feel if you have your basics sorted, then just a single read can
with a single read, you can get all your concepts. Like you can actually uh, get all the concepts back. You can actually, it doesn't take a long time to revise all those topics. But if you haven't, then you have to spend a little more time. Also, फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो काफी ऐसे ऐसे एक्सपेक्टेशन के 6 सेमेस्टर निकालते हैं यार हम लोग. एक्सपेक्टेशन हो गया कुछ भी हो गया तो हम 6 के 6 सेमेस्टर निकाल रहे हैं. फर्स्ट टॉपिक जो है उसमें लाइक मीडियन मोड की प्रॉपर्टीज हैं वो याद आ जाएंगी. स्क्यूनेस कर्टिसिस है वो वही बेसिक टॉपिक है फिर से. वो भी एक्सपेक्टेशन से यूजली निकलता है डिस्ट्रीब्यूशन का. So that is something that you can work upon. Also, if you haven't, please ask any friend of yours to share the notes, or like if you can follow my strategy not to make any notes and just books से ही पढ़ते रहो. Yeah, So the next question. Can we aim two papers at the same time? depends on your like. A lot of my friends have aimed for 2 papers. One of them went for stats and economics too. So yes, you can, but you have to give a little more time for that. नहीं तो मोस्ट ऑफ माई लाइक बैचमेट जो इस साल दे रहे थे लाइक 22 पास आउट उन्होंने ओआर और स्टैट्स का तो साथ में दिया ही था तो यस क्या. How to manage revision and mock test in last 3 months of IIT JAM preparation and how to prepare our mindset on the actual day of exam. So this is for IT jam or this is for CUET, IIT just to be JAM. sure. Okay, so 3 months is will be quite hectic considering you guys have college preparations and college exams too coming up this November, December and January. If you have your basics sorted, jam के लिए 3 महीने बहुत हैं. But if you don't, then it is tough. But considering जितने मार्क्स आज के टाइम पे तुम्हें चाहिए, I don't know if इस साल का पेपर कैसा होगा, but हिस्टोरिकली देखा जाए 50 मार्क्स पे हम लोग के लाइक 2020 तक 50 मार्क्स चाहिए थे. उसके 21 में 46, उसके बाद 42 और इस साल तो सीधे ही 35. अगर ऐसे ही ट्रेंड चलता रहा तो हो सकता है 30 मार्क्स पे भी अगले साल मिल जाए. सो रैंडम वेरिएबल्स, एस्टिमेशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 टॉपिक भी अगर आपके सॉलिड हैं तो इन 3 टॉपिक्स से 60 मार्क्स का पेपर बनता है एग्जाम में. सो यू कैन फोकस ऑन दीज टॉपिक्स एंड यू कैन रिवाइज द बेसिक्स ऑफ ऑल द टॉपिक्स आई वुड से. सो इन अ वे जस्ट टारगेट द इजी क्वेश्चन. लाइक हर एग्जाम में थोड़े इजी, मॉडरेट और टफ होते हैं. हम लोग कई बार क्वेश्चंस को ईगो पे ले लेते हैं लाइक आई डिड. सो ये मिस्टेक मत करना एंड माइंडसेट शुड बी वेरी चिल. क्वेश्चन नहीं हो रहे, आगे हो जाएंगे. इस उसमें मत रहना कि नहीं हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, क्या होगा. ये सब बात की फिलोसफी है. सो आई विल से दिस, just make sure you have a chill mindset. Next question. Can you please guide on other career opportunities rather than ISS for MSc Statistic graduate? Okay, just in the field of statistics or interdisciplinary field. Um, For instance, a lot of my uh, batchmates are going for their MBA courses. So, I guess it's for statistic only. okay, so data science, data analytics, risk analyst, all these domains are quite popular. अगर आपको कॉर्पोरेट में जाना है, अगर गवर्नमेंट का काफी मन है, so there's this जॉब. सीजीएल में ही एक जॉब होती है. वन ऑफ माय बैचमेट्स गॉट लाइक एमएससी के बैचमेट्स को मिल गई है. It is called statistical investigator. So if you're more inclined to this, RBI, DISM, DSIM, I guess it is called. वो काफी एक हॉट शॉट करियर प्रेफरेंस है क्योंकि उसका पे स्केल काफी अच्छा होता है. एज अ लाइक एज अ यंग रिक्रूट तुम लोगों की सैलरी शायद 1,10,000 तक होगी. तो मुंबई लोकेशन होगी तो 75,000 तो सिर्फ एचआरए का मिलेगा. यू कैन एक्चुअली गो फॉर दैट. The next question. What other options are there available for better placements after doing PG in statistics? I don't think you need to do anything else apart from
like if you want to get placement, MSc statistics के बाद काफी अच्छी हो जाएगी. After a certain career, like 5-6 years के बाद, if you want to be that head of computational data or whatsoever, तब वो लोग कई बार ऐसे कुछ कंपनी जैसे PhD मांगती हैं. फॉर इंस्टेंस अल्फाबेट में मैंने एक जॉब पोस्टिंग देखी थी, हेड ऑफ कंप्यूटेशनल डेटा न्यूयॉर्क में. सो इट वाज 10 प्लस ईयर एक्सपीरियंस. वो लोग PhD मांग रहे थे. सो कई बार ऐसा होता है कि PhD करनी पड़ती है, बट it's getting, I don't think anyone is doing PhD and working for corporate now. I'm not aware of it. It's a, what are the options? What- I don't know. Sorry, I'm not much aware about it. So we have covered most of the doubts. If anyone has any doubt, please put your questions in the comment box, chat option. Well, I don't think anyone have any question. So as we bring our interactive webinar to a close, I want to express my sincere gratitude to each and every one of you for your enthusiastic participation and unwavering dedication. Your insightful questions and your commitment to learning have been instrumental in making this webinar a resounding success. I also want to take a moment to acknowledge the hard work put in by the organizers and the individual support provided by our esteemed professors, which has made this webinar and the contribution of our alumnus truly exceptional. As we part ways, let us remember that the pursuit of knowledge is an endless journey. Keep up the excellent work, and you will become to realize nothing is beyond your reach. Thank you for your active participation and good luck for students appearing for CUET PG 24. Hope this webinar was fruitful to your preparation. Thank you so much. Thank you so much, everyone. You guys, thank you so much. Okay. You guys can Bye, leave. guys. Best of luck. Best of luck, everyone, especially to the third years. I hope most of you makes to the IT, and I hope to see many of you in the next year. Thank you, Divyansh, for your So much. So, bye. everyone except the cabinet can leave. Thank you so much for joining, guys. Khushi, please stop the recording.